as I told you that there are total 5 heads of income. Okay. Yes, ma'am. And in these 5 heads of income, what is your income under the head salary? Second is your income property. And third is your income under the head business and profession. Fourth is your income under the head capital gains. And fifth is your income from other sources. Okay. So, as you are aware that there are total 5 heads of income. One is income under the head salary, second is income under the head house property, and third is income under the head business or profession, fourth is your income under the head capital gains, and fifth is your income from other sources. So, when I talk about these 5 heads of income, okay, the salary chapter is something which we have already concluded, right? Today, although I should start with income under the head house property और उसके बाद business और profession पे जाना चाहिए, but for a time being, in order to keep ourselves interested to these sessions, I would say, I'm starting with income under the head capital gains. Why? The reason is very simple. Many of you are into, maybe I am assuming that you must be aware about future options. Are you dealing, is there someone in the class who is dealing into future options? FNO trading, share, investments, etc. No, ma'am. No, no one is investing into shares. Maybe Priyam Singh, you want to say something? Okay, so you just invest. Okay. Is there anyone else who also invest in shares, or maybe they want to invest in future in into shares or something like that? तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप नहीं करते तो आपके जानने वाले करते होंगे, ठीक है? और अगर आप इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में, तो देयर आर बेसिकली जो कैपिटल गेन रेट्स हैं, दे हैव बीन चेंज्ड। सपोज करो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है एंड इफ यू आर सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, तो जब आप सेल करते हो उसके टाइम पे भी आपका कुछ कैपिटल गेन लगता है। लास्ट ईयर the budget announced on 23rd July 2024. This was the Finance Act Bill number 2. And in this budget, many changes were announced. Okay, many changes were announced by our Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. ठीक है? इतने सारे चेंजेस हुए कि पूरा कैपिटल गेन का जो अस्तित्व है ना, वो ही चेंज हो गया. So if you're someone who had studied the income tax before in maybe in your BCom or maybe in any area, अगर आपने पढ़ा होगा कैपिटल गेन, let's say 2 years back, but last year से जो फाइनेंशियल 24-25 है, वहां से कैपिटल गेन में मेजर चेंजेस आए हैं, एक्सट्रीमली वाले जो एक होता है ना कि बिल्कुल ही चेंज कर दिया, वो वाले चेंजेस हैं. And that is the reason I always pick up this topic these days. So once we are done with the salary, you will find a lot of employees who are into this share trading. Share trading, and here I am including the fusion options as well. Okay, FNO trading, etc. So let's start with our income under the head capital gains. If there is any income, अगर मैं इनकम के बारे में बात करूं, सो उस इनकम के लिए कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं. There are two things which are most important for an income to be charged under the head capital gain. And what are these two things? Number one, there should be a capital asset. एक तो capital asset होना चाहिए. Second, there should be a transfer. So if
these two things are occurring together, okay? If these two things are occurring together, then whatever the income you're earning, it will be taxable under the head capital gains, okay? Just say, for example, how many of you are aware that Ratan Tata has transferred quite huge money to its relatives, जो property वगैरह transfer करी उन्होंने अपनी will के हिसाब से, ठीक है? So capital asset, let's say कोई property है, property is my capital asset, right? But this is one section called section 47, and as per this section, if we are transferring any property through will or किसी तरीके से अगर आप will के अंदर गिफ्ट के थ्रू अगर आप शेयर कर रहे हो ट्रांसफर कर रहे हो then that property is not considered as transfer. So that means those relatives who have received this property of Ratan Tata, okay, in their hands, this is not at all taxable. So even if they have received property worth 3,000 crore rupees, it does not matter. It is not at all taxable. Are you getting my point, what I'm trying to say? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Please tell me. Yes, ma'am. Okay, perfect. So, when we talk about capital asset, okay, what are the things that we cover under this head? What is my capital asset? So, capital asset, number one, it includes property of any kind. Property of any kind. So, basically, let's say you have a property in your name. Property includes your land or building, जो आपकी जमीन जायदाद कहते हैं ना, अगर वो है, okay. Whether you are using this for business or profession or not, it does not matter. Okay, repeating the same again. Capital asset means property of any kind, whether or not used for business or profession. Whether or not used for business or profession. So, property of any kind, whether or not used for business or profession. Okay, this is my capital asset. Also, if there are any securities which are held by FIIs, okay, any securities held by FII. What is the full form of FII? FII stands for Foreign Institutional Investor. Okay, FII stands for Foreign Institutional Investor. Okay, so if there are any securities which are held by foreign institutional investor, then that is also a capital asset. What does that mean? Let's understand. So what happens? You will find, let's say, you will find a lot of non-residents. Let's say many people from US, UK, let's say UK. They want to invest in India. Okay, they want to invest in India. But they are somehow scared to enter into the Indian market because on an individual basis, it's difficult for me to enter. And how would I know? How can I trust these companies? Are you getting my point? Repeating the same in Hindi. बहुत सारे ऐसे नॉन रेजिडेंट्स है, लेट्स सपोज करो हम ही हैं, प्रवीण है, वी हैव प्रवीण here, राजीव, सुमित, आकाश, and many other students we have, Priyanka is also here, right? And suppose you want to invest in UK, okay? So do you think, are you confident enough कि आप लोग यूके में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो? The answer is थोड़ा तो डर लगेगा, right? So before investing into UK, you would like to have some intermediary who would deal basically जो आपके लिए डील करेगा, right? So in this case, as you can see, there are many non-residents who are from UK. Okay, and let's take an example of UK here. Okay, there are many non-residents who are from UK and they want to invest in, let's say, India. Okay, and if they really want to invest in India, then how would they invest in India? Through FIIs.
FIIs are basically the foreign institutional investors. Okay. FIIs are basically the foreign institutional investors who invest in India on behalf of these non-residents. Okay. Indian market is basically offers a good interest rate because when it comes to the developed countries, obviously they do not offer that much. अगर आप developed countries के बारे में बात करो, let's say US के बारे में बात करें, they do not offer the interest rate. Like I have one client in US, so they do have bank account in Bank of America. The Bank of America does not offer any interest rate. In fact, they do charge the transaction charges. So suppose if we are transferring money from their account to TransferWise to and let's say repatriating this money to back to India, then obviously they are charging the transaction charges. But when it comes to the interest rate, जैसे यहाँ पे saving bank का interest मिलता है, we do not get any saving bank interest when it comes to America or the countries like America, which are basically developed countries. अगर आपको मिलता भी है तो थोड़ा बहुत नॉमिनल अमाउंट में मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत मेजर अमाउंट मिलेगा. Are you getting my point? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Please tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Just give me a second, okay? हाँ जी. Okay. Now there are few more properties. I would say there are few more capital assets which needs to be excluded from the definition of capital assets. Okay. So basically कुछ ऐसे items होते हैं which needs to be excluded from the definition of capital asset. Excludes from capital asset. Now, what are these items which are excluded from the definition of capital asset? Number one is your stock in trade. So मुझे एक चीज बताओ. Let's talk about a real estate builder. Okay. हमारा एक real estate builder है and he has so many properties available with him. For a real estate builder, the land and building basically, whatever the properties he has, whether it is a stock in trade for him or an asset for him. Real estate builder के लिए वो stock in trade है या asset है? Stock है ना मैम. Stock है. आप सब लोग एग्री करते हो वो हमारे लिए स्टॉक है? Yes, ma'am. Yes. So if there's an individual, I would say, if there's an organization or entity who are dealing with the capital assets, I mean the assets which we generally categorize into a capital asset, अगर उसको वो as a stock की तरह treat कर रहे हैं, so in that case वो मेरा exclude हो जाएगा from the definition of capital asset. फिर वो मेरा कौन सी definition में जाएगा? वो मेरा business और profession में जाएगा because this is not your capital asset. इस head में नहीं आएगा ये, business और profession head में जाएगा. Okay. Second, let's talk about movable properties. Now, movable properties के बारे में बात करते हैं. This is also something which you need to exclude from the definition of capital asset. The first movable property which I can take as an example is, let's say, car, mobile phone. These are not your capital assets. These can be assets. Like, for example, I have this mobile phone, right? So this can be my asset. But from the income tax point of view, it is not my capital asset. Why? The reason is very simple. And what is the reason? Because if we talk about mobile phone, if we talk about any, let's say, laptop, if we talk about any car, etc., do you agree with this statement that their value generally depreciates? अगर मैं कार, मोबाइल फोन और लैपटॉप के बारे में बात करूं, इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है? Yes, ma'am. सो इसमें तो हर बार ही सपोज करो लैपटॉप लिया 1 लाख का, वो बिकेगा 40,000 का, तो हर बार ही आपको तो लॉस होगा. एवरी टाइम यू विल इनकर लॉस ओनली ना. सेम विद कार. When I was purchasing my car, my friends told me that as soon as you basically आप शोरूम से कार बाहर निकालते हो उसकी वैल्यू 1 लाख डाउन हो जाती है. सेम विद मोबाइल फोन. Yes. तो अगर आप हमेशा ही लॉस क्लेम करोगे तो गवर्नमेंट को लॉस होगा. तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टीज को दूर रखो. बट देन देयर आर सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू बेसिकली एप्रिशिएट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, बट मूवेबल प्रॉपर्टीज में से कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई हैं. ठीक है.
And what are these things which are excluded from the definition of movable property? Number one is your shares, because shares की value appreciate होती है. Let's talk about jewelry. Jewelry की value appreciate होती है. So shares, jewelry, drawings. अब ये ड्राइंग वो नहीं है जो बच्चे बनाते हैं छोटे छोटे, ये वो MF हुसैन वाली ड्राइंग है, ठीक है, जो जितनी पुरानी है उतनी अच्छी बिकेगी, ऐसे वाला, ठीक है. या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, या any other work of art, any other work of art. Okay. So basically, if we talk about the movable property definition, it excludes shares, jewelry, drawings. Shares includes your securities as well. So it excludes, मतलब movable property की definition में से क्या क्या exclude किया गया है? Shares, securities, jewelry, drawings, archaeological collections, and any other work of art. So what does that mean? इसका मतलब है सिंपल सा कि ये मेरे कैपिटल एसेट हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर आप शेयर्स बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, माना जाएगा, कैपिटल गेन हमारा चार्ज होगा. ज्वेलरी, लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड, लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर, डायमंड, all these are your jewelry, right? So if you're selling these assets, the capital gain would be chargeable. Are you getting my point? Is that clear to every one of you? समझा कि नहीं समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, perfect. But do you agree when it comes to the Indian culture? Okay, when it comes to the Indian culture, when we talk about the silver utensils के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये तो हमारा तो कल्चर है, चांदी के बर्तन में पानी पीना एंड ऑल, राइट? आई एम गेटिंग माय पॉइंट. अगर मैं चांदी के बर्तन की बात करूं, तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो उसको बोलते हैं कि वो शीतल करता है. शीतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काम डाउन करता है, मुझे Yes, को ma'am. इंग्लिश में है ना. तो basically what I'm trying to say, when it comes to silver utensils, there are many case laws which are referring to the silver utensils, whether it will be considered as jewelry or not. तो we will not consider it as jewelry. समझ में आया? हम उसको ज्वेलरी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Okay. For example, now jewelry है. Suppose करो this is the shirt which I am wearing and जो buttons है उसमें मैंने gold के buttons लगा दिए. Because there were many accessories who were basically playing with the words. कि ज्वेलरी बोला है, ये ज्वेलरी थोड़ी है, ये तो अप्रैल है. ऐसा हो सकता है? Are you getting my point? कभी आपने कुछ वो शादी में सुना होगा कि दूल्हे का जो शेरवानी होता है उसमें भी कुछ ना कुछ गोल्ड का या डायमंड का लगा हुआ होता है, Right, ma'am. है ना? तो वो ज्वेलरी माना जाएगा या फिर वो क्लोथिंग का पार्ट माना जाएगा? उस केस में वो ज्वेलरी ही माना जाएगा, ठीक है? कुछ लोग फर्नीचर में कुछ डायमंड वगैरह लगा दिए, कुछ कर दिया, वो मेरा फिर ज्वेलरी ही होगा. अब आप उसको फर्नीचर नहीं बोल सकते. ओके, सो ज्वेलरी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उसमें डायमंड, जैसे फॉर एग्जांपल अमृतसर में वो है ना गुरुद्वारा, तो गोल्डन टेम्पल जो उसको बोलते हैं, तो Yes. गोल्ड से उसका Yes, हुआ ma'am. है. Mm-hmm. कहने को तो वो टेम्पल है, बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग भी छोड़ दो, तो अगर उसका जो मूर्ति है एक तरीके से, अगर उसमें कुछ रखा हुआ है, ठीक है, मैं कभी गई नहीं हूँ, सो आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो, ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें अगर कुछ भी जैसे प्रे करने के लिए कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, और वो गोल्ड का है, जैसे यहाँ पे भी बंगला साहिब है, तो वहां पे भी आई थिंक गोल्ड का ही कुछ है स्ट्रक्चर, तो वो सब क्या है? वो मेरा ज्वेलरी का पार्ट माना जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है. Yes. I hope it is clear to every one of you. Now, let's talk about rural agricultural land. What do we mean by rural agricultural land? Rural agricultural land मतलब कि एक ऐसी जमीन जो से विलेज साइड पे हो, that is known as rural agricultural land, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, ठीक है. और बाकी से दिल्ली में भी अगर आप देखो तो हम लोग बोलते हैं ना यमुना पार साइड पे, जहाँ पे यमुना नदी है उसके आसपास भी बहुत सारी ज्यादा खेती होती है ना. अगर किसी को पता होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड नोएडा, सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता होगा कि यमुना साइड पे दिल्ली में
एग्रीकल्चर हो रहा है, Yes, Yes, ma'am. हो रही है, राइट? तो अब वो क्या है? डू यू थिंक इट इज माई रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड? अगर खेती हो रही है तो रूरल रूरल में काउंट होगा। रूरल नहीं है वो, अर्बन ही होगा। दिल्ली में है ना वो। अच्छा हाँ, दिल्ली स्टेट उसके हिसाब से, यूनियन टेरिटरी के हिसाब से urban होगा, एग्जैक्टली, ठीक हाँ, उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से हमें देखना होता है कि रूरल है या अर्बन है। तो एग्रीकल्चर लैंड तो है, बट वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। मैं यहाँ पे कौन सी एक्सक्लूड कर रही हूँ कैपिटल की डेफिनेशन से? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। जैसे अब मैं कौन सी बता दूं, यूपी में ऐसे बहुत सारे गांव होंगे, यूपी में ऐसे बहुत सारे विलेजेस होंगे, ठीक है, जो लाइक बहुत ही दूर दराज इलाके में, या बिहार साइड पे, या तेलंगाना हैदराबाद साइड पे, दीज आर दी आई वुड से जमीन जो है, ये ऐसी है जो एक्चुअल में रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी हमें कैपिटल की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करना है। समझ में आया? तो मैम उसके अंदर आइडेंटिफाई करके देती होगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल पार्टी, ये जो म्युनिसिपल एमसीडी वगैरह होते हैं वो डिफाइन करके देते होंगे कि ये रूरल है, ये अर्बन है, ये एग्रीकल्चर। हाँ, वो बेसिकली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होता है। सो इफ let me just share the definition of rural agricultural land with you. Okay, just give me a second. Okay, अभी आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड का एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। So let's talk about rural agriculture land. So rural agriculture land is a land which is situated outside a specified area. Okay? और मतलब कि अगर इन शॉर्ट बोले तो जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है वो मेरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। So this is the definition of rural agriculture land. Okay? Now if I proceed further, specified area. What do we mean by specified area? Specified area means urban agriculture land. Okay? सो अगर आपका एक पॉपुलेशन है, अगर आपका एक एरिया है जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और अप टू 1 लाख तक है, ओके, इफ there's a एरिया, ओके, और उसका जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 1 लाख है, देन उसके विद इन द 2 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है वो मेरा अर्बन माना जाएगा। एंड देन इसी एरिया से लेकर लेट्स से द पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया एक्सीड्स 1 लाख बट अप टू 10 लाख, देन सेम बॉर्डर से लेकर यहाँ तक का जो पॉपुलेशन है, लाइक फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट जीरो टू अप टू 6 किलोमीटर, okay, then this would be considered as my urban agriculture land. Further, let's talk about if the total population is more than 10 lakh. Let's, for example, we have taken the example of Yamuna river का side पे जो हमारा agriculture activities हो रही है. So do you agree from the point of Yamuna river वाला जो location है अपना, right? From this area, यहाँ का जो population है must be above 10 lakh rupees, right? Yes, 10 ma'am. lakh rupees क्यों बोल रही हूँ मैं? 10 lakhs people. 10 lakh होगा, ठीक है, okay. So I don't know why, because maybe शायद we are into mostly into the numbers. So जब हम rupees चलता है ना अपने साथ, so sometimes what happens whenever we are pronouncing any other number जो कि other than the financial numbers है, so उसमें भी हमारा rupees निकल जाता है। Anyways, okay, so from point zero, which is my Yamuna river, till up to 8 किलोमीटर, so यहाँ से लेकर up to 8 किलोमीटर तक का that would be my, उसके आसपास जो भी अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है किसी जमीन पर, that would be considered as my urban agriculture land. Is that clear to every one of you? Are you getting my point? यस मैम। Yes, ma'am. आज मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। आशा, आप हो यहाँ पे, मुझे निराशा मत नहीं चाहिए। मैम एक हाँ क्वेश्चन, जी, ठीक है, किस बताइए। मान लो कि एक इंडियन पर्सन है जो फॉरेन में मान लो कोई लैंड ले लेता है और उसको सेल आउट करता है, इंडिया में पैसा आता है, तो कैपिटल गेन माना जाएगा? और इट डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। हाँ वो रेजिडेंट ही है, मतलब इंडिया में ही रहता है वो, मगर फॉरेन में उसने लैंड में इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, तो वो कैपिटल गेन है एंड द सेम इज इंडिया। ओके। ठीक है,
ठीक है। Further, I have prepared this one more slide for rural agriculture land because काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता था जब भी मैं पढ़ाती थी. So I thought to create one more like with an example. So एंड ये जो डिस्टेंस हम देखते हैं ना अप टू 2 किलोमीटर तक देखते हैं फ्रॉम बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अब यमुना रिवर से लेकर अगर आप रोड से चलोगे तो 2 किलोमीटर तो थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं होगा. तो बर्ड्स आई व्यू इज बेसिकली जैसे पंछी उड़ता है ना तो प्रॉपर जो 2 किलोमीटर जहां तक जा सकता है वो वाला 2 किलोमीटर के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया मैम. समझ में नहीं आया. ओके इसको ड्राइंग से भी समझा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दिस इज द यमुना रिवर. ओके एंड यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चल रही हैं. ये मैंने जो भी है ठीक है. अब अगर मैं बोलूँ तो रोड साइड चलेंगे तो रोड साइड पे तो हमारा क्या होगा लाइक 2 किलोमीटर जल्दी खत्म हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. पेड़ भी होंगे सब कुछ होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी जो मुझे 2 किलोमीटर देखना है वो मुझे बर्ड्स आई व्यू से देखना है. तो जैसे पंछी ऊपर से उड़ता है जैसे पंछी ऊपर से उड़ता है वैसे वाला 2 किलोमीटर देखना है. तो वो हो सकता है यहाँ तक जाए. अभी आ रहा है समझ में? यस मैम. ma'am. किसी और हाँ जी कोई और क्वेश्चन है क्या? Yes, ma'am. Ma'am, can you please explain once more? Like the aerial view, ma'am, कैसे मतलब ऐसे एक प्रॉपर डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा ना कि 2 किलोमीटर कैसे हम लोग उसमें डिसाइड करेंगे मैम फ्रॉम द बर्ड आई व्यू. जैसे बर्ड आई व्यू का मतलब है जैसे एरोप्लेन देखो. ओके बर्ड आई व्यू का मतलब है जैसे आसमान में कुछ भी लाइक बैरियर्स नहीं होते ना. यस मैम. तो वहां से लाइक पॉइंट 0 से लेकर वहां तक का Okay, देखना. ओके थैंक अभी यू. आ रहा है समझ में? ओके यस मैम. मैंने बर्ड भी बनाई थी आप लोगों ने शायद देखा नहीं अच्छे से अभी आ गया ना? आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो? Yes, ma'am. हाँ जी देखो चलो ये आगे करते हैं. ठीक है सो रूरल एग्रीकल्चर लैंड का हम एग्जांपल लेते हैं. ठीक है लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है चलो लेट्स टॉक अबाउट एरिया ए. ठीक है एरिया ए और उसका पॉपुलेशन है 9,000. ठीक है उसका पॉपुलेशन है 9,000. 9,000 है तो मतलब बताओ क्या वो मेरा कैपिटल एसेट होगा? द आंसर इज नो. क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज माई रूरल एग्रीकल्चर लैंड. सो जिस एरिया का पॉपुलेशन हमारा 10,000 से कम है इट इज माई रूरल एग्रीकल्चर लैंड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम. क्योंकि अगर आप अर्बन एरिया का डेफिनेशन देखोगे इट इज सेम इट विल बी कंसिडर्ड एज अर्बन एरिया इफ द पॉपुलेशन एक्सीड्स 10,000 but up to 1 lakh then up to 2 kilometer of that area would be considered as urban agriculture land. What about the 3 kilometer जैसे भी हम आगे एग्जांपल में करेंगे. सपोज करो पॉपुलेशन इज लेट्स से 80,000 और ये 80,000 है विद इन द लाइक से 3 किलोमीटर लिमिट. सो डू यू थिंक इट इज माय अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और रूरल वन? रूरल. It is my rural, right? यस मैम. Are you getting my point? What I'm trying to say? रूरल. यस मैम. है ना? तो देखो आज सुन लेना सब लोग. मुझे बहुत आशा है आप लोगों से. So above 10,000 but up to 1 lakh would be my urban agriculture land. So below 10,000 would be my rural. And if it is my rural, so we will not consider it as capital asset. I hope it is clear to every one of you, right? यस मैम. Yeah. Okay. Now let's talk about area B. In this area, the population is 80, okay, which is within this limit. And but this population is up to 3 kilometers, as you can see. Up to 2 kilometer would be my urban agriculture land. So the 3 kilometer lena hai, then the population should be between 1 lakh to 10 lakh. Are you getting my point? यस मैम. अगर 3 kilometer लेना है, then the population should be between 1 lakh to 10 lakh. 10 lakh. In this instance, it is up to 3 kilometer, but the population is 80,000. So therefore, it will not be considered as my capital asset. I hope it is clear to every one of you. पूरा जमीन. मैम ये अगर आपने कहा कि विद इन 6 किलोमीटर 1 लाख टू अगर 1 लाख से ऊपर 10 लाख के अंदर में है तो इट इज अ हाँ जी. कैपिटल
मतलब एसेट हो जाएगा ना वो। 1 अगर लाख above से 10 का हाँ 1 लाख पॉपुलेशन है और अप टू 6 किलोमीटर का है तो वो मेरा अर्बन माना जाएगा, और अर्बन माना जाएगा तो वो मेरा कैपिटल एसेट होगा. बट सिंस इट इज 50,000 and within the 3 kilometer limit, so it will be considered as my rural one. तो ये जो लिमिट दी गई है मतलब मतलब कि ये ऐसा है कि एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया में है तो वो मतलब इंक्लूड नहीं होगा कैपिटल एसेट के अंदर, बट ये लिमिट है, एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर, उसी की है ना ये लिमिट। Conditions are not exceptions. और हाँ सॉरी कंडीशंस। हाँ हाँ, ये उसी की लिमिट है, और ये इंडियन वाला जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है उसकी लिमिट्स है. ठीक है. तो 2 किलोमीटर के अंदर अगर 10,000 से 1 लाख तक के हैं तो मतलब विद इन है तो रूरल है, उसके आगे मतलब जाएंगे तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा। विदिन है तो वो मेरा अर्बन है, ये अर्बन की कंडीशन है सारी की सारी. हाँ तो विद इन अगर 2 किलोमीटर के अंदर है तो रूरल होगा ना, और नहीं वो अर्बन होगा, सॉरी हाँ अर्बन होगा। अर्बन हो गया. हाँ जी. हाँ और अगर ठीक मेरा वो है और अप टू जैसे 3 किलोमीटर है तो मेरा क्या होगा, वो रूरल माना जाएगा, और रूरल माना जाएगा तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा. ठीक है। समझा कि नहीं समझा? आ गया? हाँ 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 okay. Perfect. Now, let's talk about area C. Please tell me whether you are able to understand this or not. The population is 7 lakh, which is within this limit, and up to 7 kilometer. Whether it should be considered as my capital asset or not. Whether it should be considered as my capital asset or not. No. Why? Because for me to consider it. 6 Sorry? किलोमीटर के आ रहे ना, हाँ ठीक है। 6 किलोमीटर के बाद आ रहा है ना, तो हाँ, for हाँ। me to consider this capital asset, it should be up to 6 kilometers. But since it is my 7 kilometers, so and the population is 4 lakh, which is although between the 1 lakh or 10 lakh criteria, as you can see in this condition number 2, but it should be up to the limit of 6 kilometers. But since it is within the it is exceeding the desired limit, so it will be considered as rural agricultural land. And since it is rural agricultural land, so it will not be by capital asset. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, ma'am. हाँ जी, चलो ठीक है. Let's talk about area D. Please tell me whether you are able to relate with the same. समझ में area D और E को देखो आप लोग, समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ते हैं. यस मैम क्लियर है। बियॉन्ड 8 किलोमीटर तो वो कैपिटल एसेट होगा ही नहीं। Beyond 8 kilometer, it will never be considered as my capital asset, right? Because it will be never considered as my urban agricultural land. Not my urban agricultural land, तो मेरा ये rural हो गया. Rural हो गया, so it is not my capital asset. Are you getting my point? यस मैम। So 9 kilometer वाले में it is not my capital asset, but 8 kilometer वाला we can consider as my capital asset, as you can see in the given example. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Okay, perfect. Now, okay. अब ट्रांसफर के बारे में अगर मैं बात करूं, let's talk about transfer. The definition of transfer is given under section 2, clause 14 of Income Tax Act 1961. Okay, what do we mean by the term transfer? So when we talk about transfer ना, we consider कि अच्छा सेल होना चाहिए, ठीक है, सेल होना चाहिए और बेसिकली एक्सचेंज होना चाहिए, रिलिंक्विशमेंट होना चाहिए, एक्सटिंग्विशमेंट होना चाहिए, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ. बट व्हाट डज these terms mean? So I have explained these terms like one by one. So let's talk about sale. Sale is basically, obviously you're getting some consideration, then that is considered as sale, right? What is exchange? कि exchange में तो क्या होता है कि भाई एक प्रोडक्ट लो दूसरा प्रोडक्ट दो, right? So it would be considered as my barter system. Are you getting my point? Like for example, यहाँ पे तो मैंने मोबाइल फोन कर दिया था मैंने, जैसे इस केस में as you can see, let's say in this example, we have one person called Mepan. Okay, ये आप लोग अपना नाम कर दीजिए. So let's say मेरा एक स्टूडेंट है Mepan करके, and then there is another student called Gaurav. Okay, and they have decided that okay, we are going to exchange our houses because say Mepan lives in Tamil Nadu, या Chennai, and Gaurav lives in Delhi. Now Mepan decides to shift himself to Delhi and
Gaurav decides to shift himself in Chennai. In both these scenarios, they have decided since our property value is same, let's exchange our properties. Okay? अभी यहाँ पे although आपको ये Samsung और iPhone का मोबाइल फोन दिख रहा है, but these are not my capital assets. For me to consider this example, obviously I have to exchange the capital assets, right? And the capital asset is basically, let's say, these are the properties which we are basically transferring. So from, let's say, Mepan decides कि वो गौरव को अपनी चेन्नई का प्रॉपर्टी दे देगा एंड गौरव डिसाइड्स कि वो अपना दिल्ली का प्रॉपर्टी दे देगा. So they are both, what they are doing, they are basically exchanging their properties with each other. Then that is also considered as transfer. ज्वेलरी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं विद नो मॉनेटरी कंसिडरेशन. अब हम लेते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ रिलिंक्विशमेंट. व्हाट डू वी मीन बाय रिलिंक्विशमेंट? Relinquishment means giving up rights on an asset. Okay, so sometimes I do like to make animated videos. So as you can see, this is the man. ये थोड़ा old बंदा है and he is basically saying अब तो मैं मरने ही वाला हूँ. So let's give up rights on this property. So he has this big house, the कोठी, बंगला और मकान जो भी आप समझ सकते हैं. और ये कह रहा है कि यार देखो अब तो जीने के हैं 4 दिन. स्टूपिड एग्जांपल है, बट जी रही है 4 दिन और बाकी दिन तो बचे ही नहीं. तो ये डिसाइड करता है कि भाई देखो मैं अपनी प्रॉपर्टी में राइट गिव अप कर देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल दिस मैन डिसाइड्स टू गिव अप rights on this asset. So it includes sacrifice, forgo or to leave something voluntary. और voluntary कोई क्यों ही करेगा, because obviously वो मरने वाला होगा, जो भी उसका XYZ रीजन होगा, राइट? या फिर उसको बहुत ही ज्यादा दान में देने की आदत होगी, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये होता है हमारा रिलिंक्विशमेंट. समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? यस मैम. हाँ, कि आप वॉलंटरी को लीव कर रहे हो, कि आपका मन है आप लीव कर रहे हो, है ना? तो ये हमारा रिलिंक्विशमेंट कहलाता है. लेट्स टॉक अबाउट अनदर टर्म कॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट. कहाँ गया एक्सटिंग्विशमेंट? Extinguishment is basically the forcefully you are just like आप कुछ चीज ले रहे हो. You need to compulsory give up your right. For example, जैसे कंपनी के शेयर्स हैं और कंपनी के शेयर्स आपने पेमेंट करनी थी 100 रुपए की, 100 रुपीज की, बट यू हैव नॉट मेड द पेमेंट. So company saying कि मैंने आपको shares दिए थे, let's say I have given you 10 shares or maybe 20 shares, and since you have not made the payment, so now I'm forfeiting these shares. Okay, so the reason, or I would say the difference between the relinquishment and extinguishment is basically relinquishment is your voluntary giving up rights. You're voluntarily giving up your right on a particular asset, whereas when it comes to extinguishment, it's basically you need to compulsory need to give up. You have no choice. You have to give up your rights on that particular property. तो ये हमारा मेजर डिफरेंस होता है रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट में. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? यस मैम. हाँ जी, हाँ जी. और अब हम बात करते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन. सपोज करो आपका घर एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डेवलप एक से मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है. So they will compulsory acquire your property, right? तो उस केस में compulsory acquisition अगर आपका हो रहा है, so that is also considered as आपका क्या माना जाता है, वो आपका compulsory अगर acquire हो रहा है तो वो भी आपका ट्रांसफर माना जाता है. Is that clear to every one of you कि वो चीज भी आपकी ट्रांसफर मानी जाएगी? यस. ओके, चलिए